E-invoicing, electronic invoicing in GST. Are you ready to prepare the electronic invoicing in your business, which is going to apply with effect from 1st August 2023? 1st August 2023, the sixth phase that is going to be applied to the certain class of taxpayer. और ये certain class of taxpayer कौन है, किसके ऊपर ये अप्लाई होने जा रहा है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू नो, गुड्स एंड सर्विस टैक्स कैन बी कंसिडर्ड एज अ गुड एंड सिंपल टैक्स फॉर योर बिजनेस. Goods and service tax can be considered as a good and simple tax for your business, provided you are following the compliances of goods and service tax. It can also become a garbosing tax for your business. It can also become a gunda service tax for your business. Choice is yours. So electronic invoice is one of the important notifications that is going to be applied in your business with effect from 1st August 2023. And if you are not applying this in your business, no matter who you are, no matter what size of business you have, very important that you must apply this. And there are certain class of taxpayer which are going to be implement the electronic invoice from 1st August 2023. So ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इलेक्ट्रॉनिक इन्वॉइसिंग चॉइस आपके पास नहीं है, आपको इलेक्ट्रॉनिक इन्वॉइस अप्लाई करना ही पड़ेगा. नाउ यू प्लीज लेट अस अंडरस्टैंड द स्टोरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इन्वॉइस. ये है क्या? ये कोई नया नहीं है सिस्टम में. इलेक्ट्रॉनिक इन्वॉइस नया नहीं है सिस्टम में, बट ये जब भी आता है ना, लोगों के लिए कुछ नया लेकर के आता है. बिकॉज जब ये आपके ऊपर अप्लीकेबल था नहीं, तो आप इसके ऊपर फोकस नहीं करते हैं. राइट नाउ इट इज गोइंग टू बी अप्लाई टू द सर्टेन क्लास ऑफ टैक्स पेयर, तो ये उनके लिए नया है. राइट सो आपको ये जानना जरूरी है कि स्टोरी क्या है, कहानी क्या है इसके पीछे. इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस फर्स्ट टाइम इन इंडिया एंड दैट वाज अप्लाइड विद इफेक्ट फ्रॉम 1st अक्टूबर 2020. राइट ये फर्स्ट टाइम अप्लाई हुआ था 2020 1 अक्टूबर से. राइट तो 1 अक्टूबर 2020 से फर्स्ट टाइम जब अप्लाई हुआ था, तो टर्न ओवर लिमिट उसमें क्या थी? बिकॉज ये पूरा जो इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस का खेल है ना, ये टर्न ओवर के ऊपर है. टर्न ओवर बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस इज अप्लाइंग. राइट तो 1 अक्टूबर 2020 जब ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द टर्न ओवर लिमिट वॉज मोर देन 500 करोड़. Right? So all those entrepreneurs and the business owner whose aggregate annual turnover at that point of time is more than 500 crore is compulsory applying the electronic invoice. जब 1 अक्टूबर 2020 के फर्स्ट टाइम इंप्लीमेंट हुआ था ना, बाकी सारी कंपनीज कॉर्पोरेट और द एंटिटीज जिनके ऊपर ये अप्लाई नहीं हुआ था, दे वी आर मोर हैप्पी कि चलो मेरे ऊपर अप्लाई नहीं है. बिकॉज जब फर्स्ट टाइम ये इंप्लीमेंट हुआ था, काफ़ी सारे प्रॉब्लम से, समझने की प्रॉब्लम से, किसके ऊपर अप्लीकेबल है, कैसे इंप्लीमेंट करेंगे. After passage of a 3 month, from 1st January 2021, the turnover limit was reduced from 500 crore to 100 crore. So 500 करोड़ से सीधा 100 करोड़ कर दिया गया. Now, जब ये टर्नओवर 500 करोड़ से 100 करोड़ कर दिया गया, so all those entrepreneurs and the business owner whose aggregate annual turnover at that point of time more than 100 crore was compulsory applying, right? And again after passage of a 3 month, that is 1st April 2021, turnover limit was further reduced from 100 crore to 50 crore. Right? So 50 crore means 6 महीना के अंदर 500 करोड़ से 50 करोड़. सी अंडरस्टैंड द इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस. क्यों गवर्नमेंट इसके पीछे पड़ी हुई है? क्यों गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस इंप्लीमेंट करवाना चाहती है हर टैक्स पेयर से? 500 करोड़ टू 50 करोड़, ओनली ए पीरियड ऑफ 6 months. So from 1st April 2021, all those entrepreneurs and the business owner whose aggregate annual turnover is more than 50 crore is compulsory applying the electronic invoice. After that, passes of 1 year, from 1st April 2022, the turnover was further reduced from 50 crore to 20 crore. 50 करोड़ से सीधा 20 करोड़. And then after passage of a 6 month, from 1st October 2022, the turnover limit was further reduced from 20 crore to 10 crore. So ये 5 फेज में अप्लाई हुआ था इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस. 500 करोड़ टू 10 करोड़, 1st अक्टूबर 2020 to 1st अक्टूबर 2022. 2 साल के अंदर आपकी टर्नओवर लिमिट 500 करोड़ से सीधा 10 करोड़ लेकर के आ गए. राइट And now the 6th phase, which is going to be applied from 1st August 2023, right? Which we are supposed to expecting that it was going to apply from 1st April 2023.
but somehow it was not applied, right? Now government has introduced the sixth phase and छठा phase apply होने जा रहा है 1 अगस्त 2023 से, and the turnover limit is more than 5 crore, more than 5 crore. So are you ready to applying the electronic invoice in your business, which is going to be applied if your aggregate annual turnover in the preceding financial year is more than 5 crore? Conditions are same. Conditions are same. The turnover conditions are same. जो 1 अक्टूबर 2020 को था वो आज भी वही है. Conditions में कोई changes नहीं है. Changes सिर्फ turnover के limits में हुए, right? So 1 October 2020, then 1 January 2021, then 1 April 2021, then 1 April 2022, then 1 October 2022, then 1 अगस्त 2023, ये 6 फेज में आपके टर्नओवर लिमिट को रिड्यूस करके इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस को अप्लाई किया गया है. नाउ व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट नाउ? बिकॉज ऑल दोस स्मॉल एंटरप्रेन्योर एंड द बिजनेस ओनर इज गोइंग टू बी कवर्ड अंडर इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस. अगर आप एमएसएमई का डिफिनेशंस देखेंगे, अप टू 5 करोड़, very small company that is called the micro entrepreneurs, right? बहुत ही छोटे entrepreneurs जो होते हैं 5 करोड़ तक माइक्रो entrepreneur, 5 करोड़ से ज़्यादा अप टू 50 करोड़ स्मॉल entrepreneur. तो अभी जो 10 करोड़ तक का टर्नओवर लिमिट था उसमें काफ़ी सारे entrepreneurs कवर हो गए थे, लेकिन अब 5 करोड़ से ऊपर कर दिया गया था. काफ़ी सारे स्मॉल entrepreneur अब फर्दर कवर हो जाएंगे. इट मीन्स सारे स्मॉल entrepreneur एज पर द MSMED definition is going to be covered under इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस. तो ये 5 करोड़ से ऊपर. एंड देन अगर आप मीडियम एंटरप्रेन्योर्स की बात करेंगे तो एज पर एमएसएमई डिफिनेशंस मोर देन 50 करोड़ बट अप टू 250 करोड़. तो ये डेफिनेशन है. उससे ऊपर अगर जाते हैं तो लार्ज कॉर्पोरेशन हो जाते हैं. तो ये सारे स्मॉल एंटरप्रेन्योर द बिजनेस ओनर जिनका भी एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस कंपल्सरी अप्लीकेबल होने जा रहा है 1 अगस्त 2023 से. सो आर यू रेडी फॉर दैट? Are you ready for that? What is electronic invoice? Why it is important for your business? And how electronic invoice is going to help in your business to be able to develop a compliant profit? This is important. This is important. So electronic invoices is going to be applied with effect from 1st August 2023 for all those entrepreneurs and the business owner whose aggregate annual turnover in the preceding financial year starting from 17-18 to the financial year 2022 and 2023, if the aggregate annual turnover more than 5 crore, then it is going to be compulsorily applicable to your business. So there is no any choice. Now you are doing the business. Your focusing is to create more profit and more profit. But if you are not complying with the goods and service tax, your profit will not be grow. You will not be grow. So this is the important that you need to understand in your business. Compliances को कीजिए. Now electronic invoice more than 5 crore and the turnover limit जो आपको देखना है starting from financial year 17-18 to the financial year 2022 and 2023. अगर किसी भी साल में अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो आपके ऊपर ये कंपल्सरी एप्लीकेबल है. कंपल्सरी एप्लीकेबल है, कोई चॉइस नहीं है. So, what are the transactions that would be covered under electronic invoice? What are the transactions that is not being covered under electronic invoice? To whom it is applicable, to whom it is not applicable? That all I'm going to explore in this video. That is more important. Electronic invoice बहुत ही important है. Electronic invoice बहुत ही important है. So the electronic invoice is applicable to all the entrepreneur and the business owner whose aggregate annual turnover in the preceding financial year starting from 17-18 to the financial year 2022 and 2023 is more than 5 crore, compulsory applicable. The transactions which is covered here is B2B, business to business, registered to register you can say, right? And the export transaction. Then export transactions. So ये आपको transactions covered होते हैं. Transactions आज भी वही है जो कि फर्स्ट फेज में अप्लाई हुआ था. Transaction आज भी वही है. तो B2B ट्रांजेक्शन अगर आप करते हैं अप्लीकेबल है. एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन आप करते हैं अप्लीकेबल है. B2C क्या ये अप्लीकेबल है? नहीं अप्लीकेबल है. स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट अप्लीकेबल है? नहीं अप्लीकेबल है. स्पेशल जोन डेवलपर्स अप्लीकेबल है. देन अगेन अगर आप कस्टमर से एडवांस पेमेंट रिसीव करते हैं, राइट, देन रिसीट वाउचर अप्लीकेबल है? नहीं अप्लीकेबल है.
रिफंड वाउचर अप्लीकेबल है, नहीं अप्लीकेबल है। सेल्फ इनवॉइस अंडर आरसीएम अप्लीकेबल है, नहीं अप्लीकेबल है। दीज ऑल आर द ट्रांजेक्शंस वेयर द इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस इज नॉट अप्लीकेबल। ये अप्लीकेबल सिर्फ है आपका तो B2B, बिजनेस टू बिजनेस एंड एक्सपोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन डेवलपर्स अगर हैं तो वो उनको भी रखा गया, राइट। सो दीज ऑल आर द पर्सन टू whom it is not applicable. It is again important. So government authority, local bodies are local authority, special zone, special economic zone unit but not developers, goods transport agency, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट एजेंसी, सिनेमाग्राफी, ये सारे वो हैं जिनके ऊपर ये अप्लीकेबल नहीं है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंकिंग, एनबीएफसी, इनके ऊपर भी अप्लीकेबल नहीं है। तो अगर ये सारे एंटिटीज अगर बिजनेस करते हैं, इनके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस अप्लीकेबल नहीं है, इनके ऊपर अप्लीकेबल नहीं है। नो वन मोर क्वेश्चंस, बिजनेस टू गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट टू बिजनेस, B2G एंड G2B। B2G अगर आप इनवॉइस जनरेट करते हैं तो आपको इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस जनरेट करना है, बट अगर गवर्नमेंट टू बी होता है, गवर्नमेंट टू बिजनेस होता है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट के लिए एग्जेम्प्टेड है, गवर्नमेंट के लिए अप्लीकेबल नहीं है। सो किसके ऊपर अप्लीकेबल है, किसके ऊपर नहीं अप्लीकेबल है, ये बहुत ही सिंपल है। आप अपने बिजनेस को देखिए, एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर अगर हो गया है, अप्लाई हो गया, कौन से ट्रांजेक्शन के ऊपर अप्लीकेबल है। B2B कोई भी ट्रांजेक्शन आप करते हैं अप्लीकेबल है, B2C नहीं अप्लीकेबल, एक्सपोर्ट अप्लीकेबल है, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, ये भी आपका अप्लीकेबल है। तो आपकी अप्लीकेबिलिटी आपको जो चेक करनी है तो आपको देखना पड़ेगा, आपको B2B, एक्सपोर्ट, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, राइट। यहाँ पे अगर आपने कॉमर्शियल क्रेडिट नोट या फाइनेंशियल क्रेडिट नोट अगर आपने इशू किया हुआ है या इशू करते हैं तो इसके ऊपर अप्लीकेबल नहीं है। ये छोटे छोटे चीज़ें जो आपको अपने बिजनेस में ध्यान रखने हैं, राइट। नाउ द क्वेश्चन हियर इज दैट व्हेन यू स्टार्ट टू इम्प्लीमेंट द इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस in your business, how you are going to implement? It is very simple. It was hard for those entrepreneurs, the business owner at the beginning point of time, the first phase, the second phase, but आज के डेट में इतना hard नहीं है। There is a complete system available. You are using the ERP software. यू आर यूजिंग द ERP सॉफ्टवेयर। आपके ERP सॉफ्टवेयर को इंटीग्रेट किया जाएगा API से, और जब ये API से इंटीग्रेट हो जाएगा आपको कुछ भी नहीं करना, आपका सिस्टम ERP सॉफ्टवेयर सिस्टम आपका इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस जनरेट करके देगा, इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस जनरेट करके देगा। सो व्हाट इज द एडिशनल एलिमेंट दैट यू मस्ट हैव इन इनवॉइस, बिकॉज अगर आप टैक्स इनवॉइस की बात करेंगे तो टैक्स इनवॉइस दैट एज पर द टैक्स इनवॉइस रूल्स, जो हमारा इनवॉइसिंग रूल्स बोलता है GST में, उसके हिसाब से हम इशू करते हैं। नाउ 2 एडिशनल एलिमेंट दैट यू हैव टू पुट इन योर इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस, that is to be called as a electronic invoice, IRN number and QR code, invoice reference number and QR code। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपका ERP सॉफ्टवेयर इंटीग्रेट हो जाएगा API से तो आपका IRN नंबर दैट इज इनवॉइस रेफरेंस नंबर जनरेट होगा और साथ में QR कोड भी आप जनरेट कर पाएंगे। ये इनवॉइस रेफरेंस नंबर कैसे जनरेट होता है, तो देर इज ए इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल IRP, राइट। सो देर इज ए स्कीमा, राइट। उस स्कीमा के थ्रू आपको जेसन फाइल जनरेट करना होता है। अगर कोई मैनुअल ऑफलाइन मोड में इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस को जनरेट करना चाहता है उसको जेसन फाइल फॉर्मेट में भरना पड़ता है। सो देर इज सम प्रिस्क्राइब इन्फॉर्मेशन दैट यू हैव टू फिल इन द जेसन फाइल एंड दैट जेसन फाइल यू हैव टू अपलोड इन द IRP पोर्टल। जब आप IRP पोर्टल पे अपलोड करते हैं जेसन फाइल तो आपको IRN नंबर एंड QR कोड जनरेट करके देता है। यही सेम काम आपका ERP सॉफ्टवेयर में API के थ्रू आता है। सो व्हाट हैपन टू द एंटरप्रेन्योर एंड द बिजनेस ओनर, वो स्टार्ट करते हैं, वो API को यूज करते हैं और सिंपली जनरेट करते हैं वो अपना वो इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस। सो इट इज वेरी इजी। while it is going to be a start in your business because your aggregate annual turnover is going to be exceed more than 5 crore, so what simply you have to do, you must have a ERP software। अगर आपके पास ERP software नहीं है then you can also apply into the offline mode, there is no any big problem, आप offline mode में भी कर सकते हैं। but for the betterment of your compliances you should start to create the electronic invoice through the ERP software। एक छोटा सा ERP सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम में रखिए, उसमें आप इंटीग्रेट कीजिए API के थ्रू एंड देन योर सिस्टम इज गोइंग टू जनरेट द इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस एंड दैट इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस इज वैलिड for the customer। now if you are not generating the electronic invoice, what happened to your business? It is a big question।
व्हाट हैपन टू योर बिजनेस? अगर आप इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस नहीं जनरेट करते हैं, जी देखिए आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कंप्लाइंसेस को फोकस कीजिए. कंप्लाइंसेस इज मोर इंपॉर्टेंट, एंड इफ यू आर नॉट फोकसिंग इन योर कंप्लाइंस, नो मैटर हाउ मच रेवेन्यू यू आर गोइंग टू जनरेट, नो मैटर हाउ यू हैव द प्लान and how you have the budget, what is important here is to make sure that you are complying with the compliances. Understand this is important. So जब आप compliances नहीं करते हैं, there is a big cost, there is a big cost, and particularly the goods and service tax. Imagine within yourself, you have generated the normal invoice, although electronic invoice is applicable to your business, you have generated the normal invoice. Would your customer is going to accept the invoice what you have generated? Would your customer is going to accept that? I don't think so. Your customer is not going to accept your invoice because you have generated the normal invoice. क्योंकि कस्टमर को इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस जरूरी है, बिकॉज उसको भी इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है, उसको भी एक्सपेंस बुक करना है. तो बायर और रेसिपिएंट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस सप्लायर के ऊपर एप्लीकेबल है तो सप्लायर इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस जनरेट करके दे, तो आपका कस्टमर, आपका बायर, आपका रेसिपिएंट जो है ना, आपके साथ धंधा नहीं करेगा. उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट की लॉस होगी, वो आपके साथ धंधा नहीं करेगा. सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर इज टू मेक श्योर दैट फुलफिल द कंप्लायंस, फुलफिल द इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस कंप्लायंस. जब आप इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस नहीं देंगे, आपका कस्टमर आपका इनवॉइस एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपकी ऑपरेटिंग साइकिल का जो फ्लो है वो प्रॉब्लम में आएगी, and you will not able to manage your operating cycle because your customer is not going to remit the fund against the invoice that you have generated. What happened? How you will pay to your suppliers? Understand this. So for taxpayer it is important. अगर आप invoice generate करते हैं being a supplier, तो आप अपने buyer के साथ में compliance fulfill कीजिए. Buyer आपका customer है. It is important, and while you are going to fulfill this, your customer is more happy, your customer is going to pay timely, your customer will create more business with you because you are a complied in a GST. That is how it is important. और अगर compliances नहीं करते हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी. So electronic invoice is not a big deal. If I summarize this, electronic invoice is going to be applied to your business if aggregate annual turnover in the preceding financial year starting from 17-18 to the financial year 2022 and 2023 is going to be more than 5 crore, then compulsory electronic invoice is going to apply, right? What transaction would be covered? The B2B and the export and the debit note and the credit note, right? It means here the invoice, debit note and credit note and the export transactions, right? To whom it is not applicable: government, local authority, special economic zone unit but not developers, ZTA, goods transport agency, passenger transport agency, financial institutions, NBFC, banking and cinematography, right? It is not applicable to them. It is important, right? And how this is going to be implement, how you can generate the electronic invoice? Very simple. You simply integrate your ERP software with the API. Your API will help to create the JSON file in the system that you will not able to see. That JSON file will upload in the IRP, and the IRP will itself generate the IRN number and QR code. Once the IRN number and QR code is generated, then you affix the digital signature and just share the digital invoice to your customer. This is how the simple flow and the process of electronic invoice, right? So that is more important. What is important for you that I wanted to approach, that please follow the compliances. Please focus on the compliances. If you have any kind of challenges in the compliances, please comment on my inbox, right? Please comment on my inbox that I will help, I will support you to be able to generate the compliant profit. That is how it is important. My objective is very simple. I'm trying to bring more and more information for you. छोटे entrepreneur, आप सोच के देखो, up to 5 करोड़ माइक्रो, 5 करोड़ से ऊपर स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को, उनको पता भी नहीं होगा, बहुत सारे को आइडिया भी नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस कैसे जनरेट करें, राइट? कैसे इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस से कंप्लायंसेस फुलफिल करें. आप फुलफिल कर सकते हैं. आपको क्या करना है कि आपको इसको इम्प्लीमेंट करना है. अगर किसी भी तरह का कोई भी क्वेरी आपको इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस से रिलेटेड लगती है, मैं आपको सपोर्ट करने के लिए बैठा हूं. व्हाट यू नीड टू डू, आपको क्या करना है, आपको सिंपली कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम्स बतानी है.
आज जब आप अपने प्रॉब्लम्स बताएंगे, आई विल कम सूनर और लेटर, बट आई विल डेफिनेटली कम. आई विल come and help you to be able to solve your problems, right? And you would be able to generate more and more compliant profit. So that is important. So are you ready to implement? Are you ready to introduce the electronic invoice in your business? Are you going to do that? Of course you are going to do that. Of course you are going to implement it, because if you are not implementing, your business is not going to be generate the largest profit. ये इंपॉर्टेंट है. छोटी मछली मध्यम मछली बनने की कोशिश, मतलब थोड़ी बड़ी बनने की कोशिश करती है, थोड़ी बड़ी बॉडी बनने की कोशिश करती है. यू नो दैट द माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज, right? Micro wanted to become small, small wanted to become medium, medium wanted to become large. And how the same would be happen when you start to focus on the compliances. If you see the large corporations, why large corporations are able to create the magnificent profit in their business? Because they have the system structures, right? They have the system structures process. They are able to fulfill that with the process. But when it comes to know about the micro, small, some part of medium, they are not following. They are not following the compliances. They do not create the process. They do not have the system structure, and because of the same, they are not able to create the kind of profit in their business. So are you among of them that you are not able to create the profit in your business just because you do not focus on the compliances? If this is the case, my dear friend, ladies and gentlemen, if you are into the micro, start to focus on more compliances to become under the small. If you are into the small, start to focus more compliances process structures to become under the medium. And if you are into the medium, start to create more objective, more focus on your business to be able to come under the large. And that principally your objective should be. So it is very important. It is very important. That is going to help in your business to be able to develop the compliant profit with the help of the GST. So now the electronic invoice that you need to start in your business to be able to generate the compliant profit. And electronic invoice is the part of goods and service tax. Goods and service tax can be considered as a good and simple tax if you are going to fulfill the compliances. Goods and service tax can be also considered as a gabbersing tax if you are not going to comply with the compliances, GST compliances. Goods and service tax can also be considered as a gunda service tax if you are not going to comply with the compliances. Choice is yours. You wanted to create your business with the help of good and simple tax, gabbersing tax or gunda service tax. It is very sure that if you are going to create with the gunda service tax or gabbersing tax, your business is not going to be built up with the right profit. So what is important here? Start to fulfill the GST compliance and develop your business with the good and simple tax approach to be able to generate more and more profit. So create the electronic invoice in your business. Start this with effect from 1st August 2023 and able to amplify more opportunity in your business so that you would be able to create the larger profit with the help of GST compliances. This is Sanjay signing out. Until we meet again, thank you. Thank you very much.